your participation. तो पहला सवाल मैं डॉक्टर नुमान अशरफ से पूछूंगा कि एक क्वेश्चन मिस मरियम अजहर ने किया है कि कैन यू गेट एडिक्टेड इफ यू इवन यूज वंस? Dr. Numan, not you need to unmute him. Search the name from the top. मैं इस पे ऐड कर देती हूँ जब तक डॉक्टर नुमान अशरफ आते हैं कि डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है सब्सटेंस जो आप यूज कर रहे हैं. जैसे कोकेन है जो कि हाईली एडिक्टिव है, और ओपिएट्स का हमने देखा कि इतना एकदम से पेन रिलीफ करता है कि इट इज गेट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल to but repetitive use is more a risk, but it depends on the potency of कि आप क्या यूज कर रहे हैं. और इस वक्त तो यहाँ पे तो इतने नए नए स्ट्रीट ड्रग्स आ गए हैं जो कि बहुत ही हाई पोटेंसी है, एंड वो 2-3 चीजें मिला के वो उन्होंने क्रिएट की हुई हैं डिजाइनर ड्रग्स. तो यस, अनफॉर्चुनेटली, बट अगेन and I will let Dr. Ashraf add. जी, मेरी आवाज अब बहाल हो गई है. Yes, I think that I agree with Dr. Basi what she said. So again, if the potency is high, yes, you can have changes in the brain. लेकिन उसमें यही है कि जो एडिक्शन है वो रिकरेंट यूज है. तो वंस जो हुआ है उसमें आप दोबारा इसलिए जाएंगे because the substance was so good and you felt so good that you are going back and you are trying to use it. Somebody just added to the chat, chasing the first high. So what happens with chasing the first high is कि जो पहली दफा जब आप यूज करते हैं, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपको कोई चीज पसंद है खाने में और उससे आपका एक मैग्नीट्यूड ऑफ 200-300 पे जो डोपामिन रिलीज हो रहा है ऑन द स्केल जिस पे मेजर करते हैं, और कोई बंदा जाकर अगर मैथ यूज करता है वो 1000 पे होता है, तो इट्स सो गुड कि वो आप कहते हैं कि यार आई हैव नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस इन माय लाइफ. अच्छा, लेकिन अब क्योंकि ब्रेन जो है उसका डोपामिन आप उसको यूज करते जा रहे हैं जितना था स्टोर, अब नेक्स्ट टाइम आप यूज करेंगे तो हो सकता है वो पहले वाली फील नहीं आए, वो कम आए क्योंकि अब आपने वो यूज कर लिया. एंड देन इफ यू कीप यूजिंग इट यू कंज्यूम ऑल द डोपामिन, तो वो दे कीप ट्राइंग टू गेट द फर्स्ट हाई. तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि किसी को बहुत ही जबरदस्त को फील हुआ है, for the first time in life they had this kind of pleasurable feeling, then they're going to go back and chase it, and unfortunately they keep on repeating it. इस तरह से वो प्रेडिक्ट होते हैं और वो ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होती जाती है. जी, और उसी के हवाले से एक और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड आई विल रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू कि जब ड्रग्स की वजह से न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो जाती हैं, तो जब हम उनको ट्रीट करते हैं थेरेपी से, मेडिकेशन से, सो क्या वो जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं? एंड इन द मीन टाइम मैं डॉक्टर रफिया को अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ. जी डॉक्टर नुमान, यू कैन स्टार्ट एंड देन गो टू डॉक्टर बासी. यस, सो चेंजेस कैन रिवर्स. और इसमें जो बेसिक है वही आपने मॉडल को ध्यान में रखना है कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है वहां पर डोपामिन की हाइपर एक्टिविटी हो गई है, और जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वहां पर उसकी जो इनहिबिटरी कंट्रोल है वो कम हो गया है. तो अब आप चाहे थेरेपी करेंगे या आप मेडिकेशन देंगे, उससे आप इसकी जो टोन है डोपामिन की वो नीचे लाते हैं, तो रिसेप्टर उसके चेंज होते हैं लिम्बिक कॉर्टेक्स में, और जो प्रीफ्रंटल है उसकी इनहिबिटरी टोन जो है वो बढ़ती है. अच्छा, कुछ ड्रग्स हैं दैट कैन हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन. तो अल्कोहल और मेथाम्फेटामिन आर टू ड्रग्स दैट कैन डैमेज द ब्रेन सेल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हम लोग कभी जो दूसरी ड्रग्स हैं उसमें अगर 30 डेज का हम टाइम देते हैं, कोई भी ड्रग्स यूज करके आए, विद इन 30 डेज अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो इट्स ऑल ड्रग इंड्यूस. अदरवाइज फर्स्ट कहीं डिप्रेशन हुआ था या साइकोसिस हुई थी, अगर 30 डेज में यूज के बाद रिकवर हो जाते हैं तो वो ड्रग इंड्यूस्ड है, ब्रेन ने रिकवर कर लिया खुद को. 30 डेज से ज्यादा अगर अरसा जाता है तो फिर हो सकता है कि प्राइमरी डिसऑर्डर हो ब्रेन का. तो अल्कोहल और मेथाम्फेटामिन में ऐसा होता है कि समटाइम यू हैव सिम्पटम फॉर अप टू 6 months, तो वो इतना डैमेज कर देते हैं ब्रेन को. तो कुछ ड्रग्स कैन डैमेज इट टू द, लाइक फर्स्ट करें आपकी माइलिनेशन डैमेज हो गई है ब्रेन की, जो कि मैथ में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो आपको बॉडी पे भी मिलेगा.
एक पेशेंट मैंने देखा था, उसको वो ही यूज्ड टू स्मोक थ्रू अ फॉयल, तो वो जो फॉयल से जब स्मोक करते हैं तो वो डीमाइलिनेशन करती है ब्रेन में, तो वो इस तरह से हो गया था कि वो बस लेटा हुआ था, ही कुड नॉट यूज हिज आर्म्स और हिज लेग्स, तो इतना डैमेज भी हो सकता है ब्रेन में। या अल्कोहल से हम देखते हैं मेमोरी डैमेज हो सकती है आपकी। थैंक यू। आई थिंक आई अनम्यूटेड डॉक्टर रफिया। तो डॉक्टर रफिया रफीक, आप कुछ ऐड करना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड नाइट कहेंगे अब हम यहाँ पे पाकिस्तान में, और आप लोगों का डिफरेंट टाइम जोन है। I think it was an excellent talk, Dr. Masood, Dr. Numan, Dr. Farah Abasi, and Dr. Zishan, Dr. Imtiaz Dogar. Good to see all my worthy colleagues today, and I think so this is a very important initiative. और जिस तरह आप लोगों ने बात की है, and one thing which I learned today was that yes, dopamine indeed plays a very important role. अब dopamine का जो रश है और जो हम लोग आजकल एडिक्शन में देख रहे हैं, हमारे बच्चे स्पेसिफिकली जो यूथ है, I think so they are bored with everything and they need that dopamine rush. तो we need to devise strategies और ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जिसमें हम बच्चों को जो है डोपामीन रश दे सकें ताकि वो इस एडिक्टिव सब्सटेंस की तरफ मत जाएं। और जिस तरह डॉक्टर फरा ने बात की अबाउट इस्लामिक पर्सपेक्टिव के वो किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, दीज 2 पॉइंट्स आई थिंक सो आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने भी ये देखा है कि हमने अभी अपने इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी से हमने अवेयरनेस प्रोग्राम, बिकॉज वी कैन ओनली काउंटर थ्रू अवेयरनेस, तो हमने एक सोसाइटी फॉर द प्रिवेंटिव इनिशिएटिव अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन स्टार्ट किया। हमारा सिंपल फोकस इज ऑन अवेयरनेस। तो हम इस तरीके से अगर बहुत से आप सब लोग जिनका ये स्पेसिफिकली एरिया है, अगर मिलके हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, तो आई थिंक सो कि ये जो आप लोगों का वेबिनार है, ये भी इटसेल्फ जो है, इट इज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव एंड स्पेसिफिकली फॉर समबडी लाइक मी। मेरा डायरेक्ट इसके साथ ताल्लुक उस तरह नहीं है, लेकिन ये क्या, आई हैव लर्नड अ लॉट। सो my heartfelt thanks and very well done everybody, all the organizers and all the speakers. Thank you. Dr. Rafia, I would like to add something, that it is so encouraging for us to see all the amazing work that you and the Institute of Applied Psychology is doing. So may Allah give you guys more strength, and we are all here to support it. एक मैं भी इसमें ऐड कर दूं चीज़ें। ये देखें, ये जो एडिक्शन की डिजीज़ है, इसको डील करने के लिए जो हमने कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म की बात की है, क्योंकि इसके स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा लोग हैं और इन तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो हर बंदा इसमें अपना अपना रोल प्ले करे तो इंशाल्लाह इसमें हम पाकिस्तान में हम ये काम करके दुनिया को दिखा सकते हैं। तो इसमें जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो कोशिश करें, इसको अंडरस्टैंड भी करें और आगे लोगों को बताएं इसके बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर मकसूद। और डॉक्टर मकसूद, आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि सुहेल अतर साहब ने क्वेश्चन किया है कि हमारे पाकिस्तान में अब हम ये देखा जा रहा है कि काफ़ी जो इलियट क्लास है या लोग जो है ना सब्सटेंस यूज़ को एक प्राइड समझते हैं, तो इज इट अ स्टेट फेलियर, और अगर है तो फिर कैसे मतलब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए? जी डॉक्टर मकसूद। जी। इसमें देखें, चाहे अमेरिका में भी हमने ये काम किया है, यहाँ पे पूरा नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के अंदर मैंने काम किया इसके ऊपर कि स्टेक होल्डर की और गवर्नमेंट की जो इश्यूज हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो पाकिस्तान में भी हमने 3 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पे भी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, जिनमें एकेडमिया के लोग भी हैं। तो इट्स नॉट इजी जॉब। स्टेट के अलावा जो स्टेक होल्डर्स के इशू हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और लोगों को इकट्ठा करना, प्लेटफॉर्म के बारे में उनको बताना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। और गवर्नमेंट के साथ भी हमने काम जो किया है, तो फेलियर में ये है कि जब तक लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इस डिज़ीज़ को, इस कोलैबोरेशन की नीड को, तो हमारा डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट का जो भी मॉडल होगा वो फेलियर में जाएगा। और अमेरिका में भी यही है कि मैंने लेजिस्लेटिव वर्क के लिए जो पेन क्लिनिक्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे, तो उनका मेरे नज़दीक जो स्ट्रक्चर है वो सूटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए उसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का जो रोल है वो डिफाइन नहीं है, उसकी लेजिस्लेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में
स्टेट का ये जिम्मेदारी है कि वो इस डिजीज को समझे और उसके अंदर जो चीज़ें लेजिस्लेटिव वर्क करने की ज़रूरत है वो करे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेट की फेलियर है कि जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं की जा रही अभी तक। और हम यहाँ पे अमेरिका में खास बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो इस डिजीज के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंज लाने की ज़रूरत है वो नहीं हो रहा। तो ये स्टेट की फेलियर है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टेट की। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मकसूद। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि आई थिंक डॉक्टर अब्बासी ने बात की थी म्यूजिक से मतलब माइंड को रिलैक्स करना, तो उन्होंने गाइडेड इमेजरी का डॉक्टर नुमान का बताया कि उन्होंने बैकग्राउंड में हवाई की वो बैकग्राउंड लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मिस रिमशा ने पूछा है कि हाउ कैन, अब जिस बंदे को सब्सटेंस यूज से एडिक्शन हुई है, मतलब वो जो डोपामीन रश उसको जो उससे आ रहा है, आप कैसे उसको ये हवाई की तस्वीरें दिखा के या म्यूजिक दिखा के उसको सेम करेंगे? सो व्हाट आर द प्रोसेस कि कैसे उसको मतलब हम करें? देखें, ये तो स्टेप वाइज चीज है। देयर आर डिफरेंट इंटरवेंशंस एट डिफरेंट लेवल्स। शुरू में तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात आई थिंक, और जो सबसे बड़ा स्ट्रगल हो जाता है एडिक्शन ट्रीटमेंट का, कि यू कैन नॉट फोर्स एडिक्शन ट्रीटमेंट ऑन एनीवन। इंसान को खुद विलिंगली किसी लेवल पे थोड़ी इंसाइट, थोड़ी विलिंगनेस, थोड़ी कमिटमेंट जब तक इंसान खुद नहीं करेगा, इट इज़ वेरी हार्ड। तो ये जो चीज़ें मैंने आज बताई, ये गाइडेड इमेजरी, ये ब्रीदिंग, ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही छोड़ चुका है और एब्स्टिनेंस कर रहा है, हाउ टू सस्टेन दैट, हाउ टू अवॉइड रिलैप्स, राइट? दिस इज काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म। शुरू में तो एकदम इमीडिएट आपको सबसे पहले उस सब्सटेंस को आपके सिस्टम से निकालना है। आपने उनको विड्रॉल के लिए मेडिकेशन देनी है, उन्हें किसी मेंटेनेंस मेडिकेशन पे रखना है। जो नोमान भी बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास पाकिस्तान में वो मेडिकेशंस नहीं है, जैसे सुबॉक्सेन है, नार्केन है। बट देयर आर स्टेजेस जब इंसान उस लेवल पे आए कि दे आर रेडी टू फाइट इट बैक, राइट? सो आप एकदम से कोई ऑलरेडी हाई हुआ है तो वो ऑलरेडी हवाई में बैठा है। उसको आप अगर कहेंगे कि इमेजिन करो कि आप हवाई में हो, तो उसको वो वैसे ही बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे इंसान है और उसको उस लेवल से इंटरवीन करना पड़ता है। सो इट्स नॉट गोना बी वन थिंग और द अदर, इट्स गोना बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। मेडिसिन से शुरू होता है, मेडिकल डिजीज है, मेडिकल ट्रीटमेंट से शुरू होगा, but then how can we enhance the supportive mechanisms? And if Noman wants to add anything more to that. Yes, I think that was a good comprehensive answer. So what Dr. Farabasi was saying, initially आपने stabilize करना है of course, क्योंकि brain में देखिए आपके chemicals जो हैं वो सारे haywire हैं। अब उसको, और हमेशा हमारी बॉडी में जो एक स्टेट है वो होम्योस्टेसिस है। आपका जब तक बैलेंस नहीं होगा बॉडी में, आप हमेशा उसमें वो सुकून नहीं आएगा। तो फर्स्ट यू नीड टू ब्रिंग दैट बैलेंस बैक। जब वो आ जाता है और फिर जब हम रिलैप्स प्रिवेंशन की फेज पे जाते हैं, तो तब हर पेशेंट को आप जब कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं क्यों नहीं यूज करूं ड्रग, आप मुझे कहते हैं ड्रग्स यूज नहीं करो, तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? तो जब ऑल्टरनेटिव की बात आती है तो तब आप बताते हैं कि दिस इज व्हाट यू कैन डू। म्यूजिक अगर आपको पसंद है आप वो करें, आप अगर रिलीजियस हैं आप प्रे करें, आपको अगर आर्ट्स पसंद है आप वो ड्राइंग करें, आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद है आप वो करें, आप अगर फूडी हैं तो आप अपना उसमें इंगेज करें, ऐसी कंपनी में रहें जिससे कि आपको उसमें ज़्यादा वो हो। तो उस वक्त ये ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। जैसे बहुत कॉमनली हमारे पास एक डिसऑर्डर है जिसको यहाँ ट्रीट करते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो वो जब आता है पेशेंट, तो उनको प्रॉब्लम ये होती है कि दे कैन नॉट डील विद देयर इमोशनल पेन, तो वो कट करते हैं खुद को ना, बहुत ज़्यादा उनकी कटिंग का बिहेवियर होता है। अब आप उससे बोले कि जी आपने जो है ये काटना बंद करना है, तो वो ये कहेगा अच्छा ठीक है, देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? तो इसीलिए फिर डीबीटी जो है वो इन्वेंट की गई थी, दैट टॉक्स अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स, कि अगर आपको डिस्ट्रेस टॉलरेंस करनी है तो कैसे करनी है, क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन यू डू। और वो सिंपल मेजर जो हम करते हैं इनिशियली के जब तक कि वो थोड़ा इस लेवल पे आए कि वो समझ सके, वो सिंपली उनको कहते हैं कि यार एक रबर बैंड बांध लो और वो स्नैप कर दिया करो रिस्ट पे, ताकि यू हैव अ फीलिंग कि देयर इज समथिंग पेनफुल एंड यू फील ग्राउंडेड, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। So you always have to give alternatives to people. You cannot just tell them to stop this and that's it because it's bad for you. Vacuum. Stop this and do this and this will help you.
बाकी देयर आर स्टडीज, हार्वर्ड हैज स्टडीज के म्यूजिक जो है वो कॉजेज न्यूरल कनेक्शंस इन योर ब्रेन, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। वो एक सेपरेट उसकी वो है कि वो कोई भी आर्ट्स की जो फॉर्म है वो आपके ब्रेन कनेक्शंस को बनाता है, आपकी एजिंग को डिले करता है, अल्जाइमर को करता है, तो देयर आर अदर बेनिफिट्स टू इट टू। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ ऐड करती चलूं कि सबसे पहले जब हम मोटिवेशनल थेरेपी की बात करते हैं, जो कि हम एडिक्टिव, जब पहले इंसान क्लाइंट्स हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सो वी आर यूजिंग मोटिवेशनल थेरेपी। लाइक मैंने आपसे कहा ना, जैसे अल्कोहल 17 साल लगे हमें उसको स्टॉप करने के लिए, सो मोटिवेशनल थेरेपी यूज की गई ना। पहले उसको कहा गया कि अल्कोहल प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है। सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि इंसान को ये समझाना कि अगर आप किसी मसले से भाग के यूज कर रहे हैं, अल्कोहल है, मैरिजुआना, कोकेन, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ओपिएट्स, तो वो मसले का हल नहीं है, वो मसले को और बढ़ाएगा। So you have to put the addictive substance in the column of problem, not the solution. And then motivational therapy होती है कि you take them through stages and then comes the relapse prevention. जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक आई नो डॉक्टर ज़ाहिद इमरान साहब काफ़ी अच्छी शेयर कर रहे हैं। इज आल्सो वेल नोन फिजिशियन यूएस में हैं कि रिलैक्सेशन हेल्प्स विद अल्फा वेव्स and by hypnosis, and an image can Yeah, be linked hypnosis. to generate a certain state of mind. और एक और क्वेश्चन जेनेटिक्स के हवाले से पूछा गया, सो डॉक्टर नुमान, इफ यू कैन स्टार्ट, फॉलोड बाय डॉक्टर अब्बासी, कि हाउ मच द रोल ऑफ जेनेटिक्स in addiction development? So most of the studies, if you pick up, it borders around 50-55%. If they have, both parents have the problem, then the genetic passage in the offsprings is for most of the diseases, it's going to be around that. So there's a huge role of that. तो होता क्या है कि अगर आपकी जैसे पेरेंट्स को है ये प्रॉब्लम और एडिक्शन का था, तो जब आपका ब्रेन बनता है तो इट इज वायर्ड इन अ वे where you have either a deficiency of dopamine, you're looking for something that you would use, and your brain connection, the prefrontal, are not developed. So वो brain wired इस तरह होता है कि it's more prone to going towards addiction. तो वो इस तरह से उसका होता है. But अगर आप देखेंगे ज़्यादातर आई थिंक साइकियाट्रिक इलनेसेस में, इनमें एडिक्शन में आप जितना भी देखेंगे तो आपको उसके अराउंड मिलेगा 45 to 55 के % कोई भी डिसऑर्डर आप लेंगे तो पैसेज. जी, राइट, एब्सोल्युटली। पर मैं इस पे एक चीज ऐड कर दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे अब्बा दादा पीते थे तो इसलिए हम भी पिएंगे। एक चीज जो हमने देखी है जेनेटिक्स में कि इवन इफ यू हैव द जीन for that predisposes you to any mental illness including addiction, जब तक environmental triggers नहीं होते वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगी। सो हमने ये बहुत सी फैमिलीज में देखा कि जैसे एक बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया है पर दूसरा इज हाई अचीविंग एकेडमिशियंस, तो क्यों ये डिफरेंस आया कि इवन दो बोथ हैड द जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, वन हैड डिड नॉट हैव द एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। सो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट, कि नोइंग योर स्ट्रेसर्स, योर ट्रिगर्स। सो वो जीन इवन अगर आपके अंदर है, you can avoid expressing it. So it's not necessarily कि अगर gene vulnerability आप में है कि you will go on to become addicted. राइट. जस्ट एक चीज मैं उसमें मुझे याद आ गई, जो हमारे चेयर है नेक्स्ट ईयर एपीए के, पेट्रोस लिवोनस, ही टॉक्स अबाउट दिस. वो कहते हैं कि आप एक परफेक्ट बंदा ले लें, जो कॉजेज हैं वो बायोसाइकोसोशल एंड ड्रग एडिक्शन के. तो आप एक ऐसा शख्स ले लें कि जिसके कोई जेनेटिक्स का भी मसला नहीं है, उसको कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ और सोशली भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसे आप दुनिया की सारी ड्रग्स दे दें, यूज कर ले, तो क्या वो एडिक्ट नहीं बनेगा? तो यूज इज अनदर प्रॉब्लम. यू कैन हैव एवरीथिंग परफेक्ट, but if you keep using it, your brain will adapt. And similarly, you can have everything bad, but if you are not using it and you are not exposed to those things, you have a better coping skills, you can still stay healthy. जी, बहुत शुक्रिया। एक बड़ा खतरनाक और खरे सच वाला सवाल है। मैं पहले अपनी बेगम को चेक कर लूं। नहीं, वो अराउंड नहीं है। तो दर्द साहब का ये सवाल है कि हाउ टू ट्रीट एंड गिव अवेयरनेस टू आवर ओन वाइव्स। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कमेंट दिया, दूसरों की बीवी बात सुनती हैं तो मानती भी हैं, तो अगर आप कुछ बता दें तो शायद वो सुन लें। तो यार इसमें एक है मुफ्ती मसूद तारिक, उनका बड़ा अच्छा क्लिप है. किसी ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें पता हो तो मुझे भी बता दो.
कि बीवी के साथ कैसे डील करना है. So but on a serious note, अगर आपको किसी से भी बात करनी है, whether it's your family member, other प्रॉब्लम क्या होता है कि इसीलिए फैमिली के लिए हम हमेशा कहते हैं, खासतौर पे साइकियाट्रिस्ट, कि डू नॉट ट्रीट योर इमीडिएट फैमिली, हैव समवन एल्स टॉक टू देम. क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना कि दूसरों, क्योंकि आप जब बात समझाते हैं ना, तो वो जो पुराना जो रिलेशनशिप इश्यूज है वो उस बीच में आ जाते हैं, तो वो इट बिकम्स अ वॉल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट. तो इसीलिए बेहतर है कि थर्ड पर्सन उनसे बात करे, उनको समझाए. लेकिन द वे यू विल एड्रेस इट is going to be what Dr. Farabasi was saying, through motivational interviewing. First, establish it's a problem. Bring it into their consciousness कि ये है भी इशू या नहीं है, और उसके बाद फिर आप उसमें उनकी हेल्प करते हैं. तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स है जो कि यूज कर रहा है कोई ड्रग, मोटिवेशनल फ्रेमवर्क से आपने काम करना है, तो आप उनसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि क्या अच्छा है इस ड्रग के बारे में. अगर अल्कोहल है तो बताएगा जी मैं सोशली जाता हूँ, मुझे जो यूज करना होता है, या फिर ये है कि मैं जो मुझे डिप्रेशन है उसके लिए करता हूँ, मुझे नींद नहीं आती उसके लिए करता हूँ. तो वो सारी अच्छी बातें बताएगा. अब उसके बाद ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन वो आपसे ये भी कहेगा कि कभी कुछ ऐसा हुआ है कि किसी चीज में आपको प्रॉब्लम हुई हो. कहेगा हाँ, एक दफा पुलिस ने पकड़ लिया था, DUI हो गए हैं, मेरी जॉब चली गई थी, मेरी बीवी नाराज हो गई है, मेरे बच्चे जो कस्टडी में. तो अब आप क्या कर रहे हैं उसको पता है, लेकिन यू आर ब्रिंगिंग दैट आउट इनटू दैट पर्सन्स कॉन्शियसनेस, कि उससे फिर वो कंपेयर कर सके कि यार, leaving all this, my life goals and my family, is it worth more than using it for sleep or using it for depression, which we can treat through medications. तो वे ये होता है कि मोटिवेशनल में बेसिकली you bring it into person's consciousness, and then you ask them कि if you think your other goals are important, how do you want to address it. तो they are the drivers, they tell you कि ये चीजें वर्क करेंगी, आप उनको menu of choices बताते हैं, and then you work with them. So basically that's the way you would address it. Dr. Basi. मैं पिछले ही कमेंट पे जाना चाह रही हूँ. आपने क्या सोचा? I'll let it pass. So just let me share one piece of research that marriage is neuroprotective for men and it's a neurostressor for women. मैं यहाँ बात खत्म कर देती हूँ. मतलब वो मर्द की 4 वाली बात कर दी आपने. So much protection. मतलब बात खरे सच से शुरू हुई और खरे सच पे ही खत्म हो गई. तो एक और चीज हमने आई वांट टू बी माइंडफुल अबाउट द टाइम एज वेल कि ट्रिगर्स की बात की हमने प्रेजेंटेशन में. सो व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अवॉइड ट्रिगर्स, लाइक एनीथिंग अदर देन डाइवर्जन? डॉक्टर बासी. इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ. देखें, जैसे बहुत दफा ऐसे होता है कि आप जब जैसे काम से घर आ रहे हैं तो रास्ते में आपको सिगरेट की दुकान है या आप कहीं रुक के अल्कोहल बाइक करते हैं. सो चेंजिंग दोज राउट्स, कि अगर मैं यहाँ से गुजरूंगा I will see people smoking or I see alcohol shops, आपने दूसरा राउट ले लिया. कोई पार्टीज हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो खास आपको पुश करते हैं. पीयर प्रेशर इज अ रियलिटी, राइट? तो कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं भाई क्या है, एक सिप ले लो या एक स्मोक कर लो marijuana थोड़ी सी, जो हम बच्चों में मेनली देखते हैं. हाउ कैन वी अवॉइड दोस पार्टीज और दोस ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स. दूसरी चीज है कि मुझे वर्क पे अगर मैं एक लिमिट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, I feel very stressed out. Can I avoid? Can I manage my work style better? If I'm not sleeping, is there something I can do to sleep better? क्योंकि finding those triggers. देखें, हम सबसे बड़ी हमारे पास physiological addiction है कैफीन, right? तो आप देखें हम कैसे रमजानों में कैसे अपने आप को अवॉइड करते हैं कैफीन की तरफ जाने से, और बाकी एवरी डे में हमारा ये हाल होता है कि नो, आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट कैफीन. सो यू innately what I want you to send the message is कि हमारे अंदर विल पावर है, बट सिर्फ हमें बहुत इंसाइट एंड माइंडफुलनेस की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है कि क्या चीजें हैं that kind of predispose me to use. जी बहुत शुक्रिया. और डॉक्टर लुबना नईम, मतलब एक बहुत बड़ी हमारी अपना फिजिशियन में, एक लीडरशिप में काफ़ी अहम रोल प्ले करी. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज टॉक अबाउट कोडिपेंडेंसी एंड केयर गिवर स्कोपिंग. नुमान भाई, यू वुड लाइक टू से? Very important. Right. So this is a huge problem जो इन्होंने केयर गिविंग कोपिंग का कहा है. एंड so जो फैमिलीज है ना उनका अब इफ दे देखें ना, ये इसको आप चाहे एडिक्शन में लें या आप उसको ट्रॉमा में लें, जो कोडिपेंडेंसी है कि आप जो है बहुत सी दफा
उनको कोई शख्स अगर यूज भी कर रहा है ड्रग्स तो यू डोंट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज आप इतने ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि यू डोंट वांट टू मेस अप योर फैमिली लाइफ एंड रप्चर द बॉन्ड्स। और ज्यादातर जो होता है वो यही होता है कि बच्चों का क्या होगा और लाइफ का क्या होगा एंड यू गेट स्टक इन दैट साइकिल। So you don't come out and you take care of it. I think more problem is we've seen in like trauma where people like get abused and they are in the domestic violence situation. They remain codependent and they don't raise their voice because their main fear is that if we do it, we're going to rupture this relationship and it's going to somehow going to harm us. And the second part was codependence and the Caretaking. caregivers. या सो केयर गिवर्स का तो आपको पता है कितना ज्यादा उनके ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट होगा। अगर कोई शख्स कर रहा है इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व है, आप खुद सोचे अगर फर्ज करें कि कोई पेरेंट्स हैं उनको पता चले कि उनका बच्चा है तो वो किस चीज से वो गुजरेंगे, किस तरह उन्होंने हैंडल करना है। इसी तरह से कोई अगर वाइफ है या हस्बैंड है उससे पता होता है कि कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है, अब वो शख्स क्योंकि उसने फीड करनी है एडिक्शन तो वो सारी चीजें भी घर की बेच रहा है, वो घर की जो है अपने सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं, वो कमाने भी नहीं जा रहा है बंदा और घर के ऊपर एक बहुत बड़ा टर्मोइल जो चल रहा है। तो वो जो केयर गिवर है उसकी भी एक अलग से जो है सपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें जो बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने आती है वो जैसे डिमेंशिया है। उसमें हम कई दफा देखते हैं कि जो केयर गिवर्स आते हैं वो बेचारे ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, नोबडी पेज अटेंशन टू देम, यू आर लुकिंग एट द पेशेंट, लेकिन वो जो उस शख्स की जो रोज जो केयर कर रहे हैं उनको जो वो उसके ऊपर जो टोल होता है उस पे भी हमें जो तवज्जो देनी चाहिए। तो डेफिनेटली आई मीन उससे जो भी केयर गिवर है they go through it. Now you can use them as a stronger force to help the treatment. तो एक जैसे ट्रीटमेंट अल्कोहल की डायसल्फ्यूरैम, उसकी जो बेस्ट स्टडी है वो ये है कि इन्होंने एक थेरेपिस्ट थे, ही डेवलप्ड स्क्रिप्ट and the script says कि husband and wife हैं and suppose कि husband has alcoholic problem and wife is supporting him कि भाई use नहीं करें, तो every morning they both would read the script and husband would say कि thanks for giving me this medication that I'm taking, we both are invested in the recovery, in my recovery, and we want to do it for our kids and our family, and the wife then repeats that thanks for taking it for our family and all. तो वो कहते हैं कि मेडिकेशन से ज्यादा जो साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। So yes, there is a huge role of the caregiver, and then there are the network therapy too as well for the addiction. But I'll hand it over to Dr. Abbasi if she wants to add anything. I think एक और point जो हमें समझना चाहिए कि there is a difference between validation and codependence. Sometimes जैसे आपने कहा बहुत से reasons, fears and not knowing how to intervene या fear of intervening कि अगर मैं रोकूंगी नहीं पिएंगे तो मारेंगे, मुझे मारेंगे, बच्चों को मारेंगे. There could be so many things there. But कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि हमने देखा कि क्योंकि we are coming from a very gendered society कि हम अगर हमारा बेटा कुछ यूज भी कर रहा है तो हमने उस चीज को अवॉइड करेंगे कि अरे बच्चा है, बिगड़ेगा, सुधर जाएगा, बेटियों पे ज्यादा सख्ती, काइंड ऑफ टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू। और बहुत सी सिचुएशन में हो सकता है ना माँ बाप ना सही वाइफ्स हैं या स्पाउसेस हैं या कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स यूज करता देखें और बोले नहीं नहीं ही वाज जस्ट हैविंग फन। मैंने अपने डॉक्टर कोलीग्स में ये चीज देखी है, ओ ही वाज जस्ट हैविंग फन टुडे, ड्रिंकिंग मेक्स हिम अनइनहिबिटेड, ज्यादा एंजॉय, ज्यादा मजेदार हो जाए, यू नो थिंग्स लाइक दैट, वी टर्न अ ब्लाइंड आई। सो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ कोडिपेंडेंसी। एक चीज है कि उसकी डिजीज मॉडल को वैलिडेट करना कि बेटा it's not a moral failure, it's a disease model, और हम उसके लिए क्या ड्रग्स मतलब ट्रीटमेंट क्या लाएंगे और हाँ मैं उसमें आपको कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ. That's different than turning a blind eye and in kind of letting things slide. So that's something I wanted to differentiate कि codependency and validation different है. जी बहुत शुक्रिया. I think I want to be mindful of time. I know there are a lot of more questions from Hafsa, Miss Hafsa, Miss Sayyida, Eman, and there are some hand raised के parenting के हवाले से, teenager के हवाले से. But I think I would request Dr. Maqsood to give the concluding remarks so that we can be mindful about everyone's time. जी Dr. Maqsood. Can I just add one thing here कि अगर ये questions आप हमें भेज दें, we can send answers. जी. Thank you, Dr. Abbasi. Thank you very much, everybody who participated today, including all the presenter.
and thankful all the academia के जो लोग इसमें participate कर रहे हैं. We will need continuous support from academia participant, and inshallah the worker on the ground. We are very, very thankful. Mehwish has done a wonderful job. So I would like everybody appreciate her work. She been very helpful. She's very dedicated working on the ground. It is a very difficult task, and also our Faisalabad team is also very, very motivated, and they are doing wonderful job in Faisalabad. Both of our sites for the project, and we're looking more help in both places. And everybody who is present in this webinar, if they can, discuss this information with their families, friends, and at workplace, it will help us to raise this awareness. So this is not one person job or one organization job. This is very, very complicated issues, and it needs a lot of help, and we will appreciate everybody, and we can save our Pakistan. As US, we also do work here, and we are doing the work here in the US as well. It's the same project. Inshallah, give us suggestions, anything that we can help. Thank you very much from my side. Anybody else want to say anything to the participant? Please go ahead. If you have a general message for the participant, any advice for the participant who are working on the ground, especially the students. जी डॉक्टर दो हैंड रेज हैं डॉक्टर मकसूद इफ आई कैन एक तो डॉक्टर अब्दुल गौरी हैं और डॉक्टर इसाक लैंग. जी डॉक्टर गौरी प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह. मैं शिकागो में हूँ इस वक्त और मैं ये सेमिनार जो है मैंने अटेंड किया. रियली अप्रिशिएट कि बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है. ये न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है, वो यहाँ अमेरिका में और बाकी जगहों पे भी बहुत बड़ा इशू है और इस तरह के सेमिनार्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई थिंक मैं खुद हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट में एज अ मैनेजर फॉर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम मैनेजर मैं देख रहा हूँ. कोई 15 कंट्रीज में है ये प्रोग्राम, पाकिस्तान समेत. तो आई वुड अप्रिशिएट कि जो है ऑर्गेनाइजर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोई जी डॉक्टर गौरी, we lost you. While we are waiting for Dr. Gori, it is okay if I, Dr. Zahid Imran sahab, unka bhi hand raises, so let me ask him to share. Ji, Dr. Zahid Imran. Ji, assalamu alaikum. Can you hear me? Ji, we can hear you. Ji, I really applaud the efforts of Dr. Maqsood and you and other people on the panel for delivering such a powerful and very impactful message. So I hope that people will continue to move forward, and the task may be very daunting but not impossible. So any help from every corner, I'm sure will be encouraged and appreciated. Thank you. जी, and आखिर में इसाक लांग साहब, let me ask them. जी. Still not unmute. जी मैंने कर तो दिया, मतलब from my side. जी. और सर बड़ी इंफॉर्मेटिव, बहुत सारी क्लैरिटीज जो हैं जो हमें इस सेशन से मिली हैं और बहुत खुशी हुई है. और सब पार्टिसिपेंट का, डॉक्टर अवासी साहब जो है, मैडम अवासी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट की, और दूसरे डॉक्टर साहबान का तो बड़ी इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रही है. तो इंशाल्लाह हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे. आपके ज़रिए से तो अच्छा रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. जी मैं मिस सिद्रा काशिफ. I think I will just request Ms. Mehwish Tariq to see if she has any final remarks, and then we can wind up.
thank you all the participants for taking time out during Ramadan. I can very well understand schedule and everything during the Ramadan. So thank you so much for making it successful. Our future maybe we'll be doing more sessions, awareness say, and please spread the message, join platform and be volunteer for HCF. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you.